ओके परफेक्ट मैंने टिके कंफर्म कर दिया ऑडियो क्लियर आछी टिके खाली कंफर्म करते हम स्टार्ट करबा क्लासेस ओके सब फाइन हां टिके कंफर्म कर दियो मेडिसिन पड़े गला फाइन फाइन ओके परफेक्ट पिले मैंने समस्ते ऑडियो क्लियर कंफर्म कर दियो स्टार्ट करिए मेडिसिन खाइयो भारी पिले नहीं पिले तमन भल लगे मेडिसिन खाइयो पिले कम इन डोरेमन वेलकम हम पुजारी आसे हां पुजारी आज सकाळ क्लास में नहंती कि इवनिंग क्लास में नहंती हां हम रिक्वेस्ट रखंतो ठीक अछि रखिबा बट मे बी नॉट नाउ बट इट विल बी हां ठीक अछि परफेक्ट अगेन नमस्कार जय जगन्नाथ प्रणाम समस्त को स्टार्ट करबा क्लासेस प्रीवियस क्लासेस हम हिस्ट्री रो ओडिसा पार्ट डिस्कस करूतले बट आज रो क्लासेस रे जियोग्राफी जेमती त माने रिक्वेस्ट करितले सर हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस हमर मिक्स सर एसएसबी टीजीटी टीजीटी ओडिया पोस्ट अपडेट कोन प्लीज टिके कोनतो किछि अपडेट नै एसएसबी टीजीटी ओडिया पोस्ट नै मोरे देह खराब जे मेडिसिन खाइ के बिरत लागला ठीक अछि परफेक्ट हो मु तो से दिन से आगरु त माने को 5-6 मास आगरु कहूची 5-6 मास आगरु कहूची एसएसबी टीजीटी ओडिया पोस्ट नाही नित्यानंद गंड सर या कहले मु तो मानु जो जिंस कहितली सेही जिंस सेम जिंस ग्रीवांस रे जाउछो सेम जिंस सुनी के आछो भलो लागुची सुनो मोर किछ असुविधा नहीं ठीक अछि स्टार्ट करिबा ठीक अछि स्टार्ट करिया जे क्लासेस आमे आज टॉपिक खला कोन आमे कहूचे इकोनॉमिक जियोग्राफी मिक्स अछि ठीक अछि समस्त जानिछो जियोग्राफी इकोनॉमिक हमर गोटे मिक्स पार्ट जोटा आम प्रॉमिस करथिले आनिबे बोली चली सीरीज चली प्रणाम 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 सूर्यका जुहार जुहार श्रेया सर मो रिक्वेस्ट प्लीज रखंतु गोटे वीडियो रे ठीक अछि श्रद्धा सर आपन को देह कमेनी मो देह केबे कमुनी ठीक अछि आई विल ट्राई ओके According to the Alfred Weber's least cost theory, an industry where raw materials lose significant weight during processing is called classified as which? Very good. I'm going to weight reducing by material oriented industry that tends to locate near a raw material sources for land. Very good. How? Well, which of the following is a classic example of an agro-based manufacturing industry? ठीक अच्छे तो हाँ ठीक अच्छे
सर आज इकोनॉमिक्स की नहीं इकोनॉमिक्स जियोग्राफी मिक्स मिक्स जोटा जियो इकोनॉमिक एटा हाँ तर 2 नंबर प्रश्न अच्छे आम कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग जोटा आम कहे हाँ नहीं अरे जियो इकोनॉमिक पे मैंने अरे इंडस्ट्री एंड लोकेशन फैक्टर जोड़ा कहे जियोग्राफी अंडर जोड़ा जाऊँ sorry 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 page रखी थी the Delhi Mumbai Industrial Corridor DMIC relies heavily on the transport the backbone provided by the which major infrastructure project जोटा आम कौन कहे वेरी गुड ना ना जड़े आंसर देदेला मैंने आंसर बही जा सेम से जिन चलो ना चलो ना चलो ना प्रणाम प्रणाम पेंजड़ी हो ए कौन कहे आम WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जोड़ा आना नहीं पे वेरी गुड हाउ what does the term agglomeration economies refer to the includes geography industrial geography industrial geography very good very good I'm going to T cost savings and benefits that the industries derive from the clustering together includes geography proximity how which of the following industries classified as mineral based manufacturing enterprises speed up jiba I'm already put time waste oh perfect नहीं 20 आंसर कुछ aluminium smelting from bauxite to ore aluminum extraction utilize the metallic mineral ore bauxite to categorize it as a mineral based industry perfect why do weight gaining industries such as soft drinking bottling or sulfuric acid manufacturing prefer locating close to their markets बन्या पानी घेर अच्छु रिलीफ नहीं आसतु कौटी बन्या हो गला सत्यजित कौटी बन्या हो सारे because the finished products weigh more are bulkier than inputs making market approximately cheaper for transport perfect the Chennai Bengaluru Industrial Corridor CBIC is being developed with the financial and technical cooperation primarily involving which international agency country बालेश्वरी बन्या हो सारे Japan International Cooperation Agency JS perfect which of the following best describes a food loose industry मधुर डिस्ट्रिक्ट धामनगर ब्लॉक अरे अरे बड़ा विकट परिस्थिति how an industry that can be located at a wide range of the places without being constrained by heavy raw material transport cost perfect for the question which of those which of the following is a classic example of public sector industrial enterprises in India Power Steel Authority of India Limited sale question हाँ नहीं perfect how SAIL is a central public sector undertaking owned by managed by the government of India perfect besides transportation cost what are the other two foundational cost pillars in Alfred Weber's industrial location model
labor cost and agglomeration economics पर प्रश्न को जीवा. Okay, the Amritsar Kolkata Industrial Corridor AKIC leverages the transport backbone of which major freight corridor? 1351 प्रश्न. Perfect. Eastern Dedicated Freight Corridor ETS. An industrial unit owned and operated jointly by the state government or public sector and private enterprise business is known as it as. सेकंड बोले तो आंसर था मैं टिक्के कल देखी दे यहाँ पर पूरा कर सोच मैपिंग फंडामेंटल्स ग्लोब मैकेनिकल्स ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स. ओके, topography states weather numbers more perfect. That's basic. Okay, yes, separate. Okay, separate. Perfect. 100%. Okay. Perfect. Noises. How? Take a spin. Thank you. I will ask for discussion. Perfect. D answer is the answer. One D is the joint sector industry is the answer. So Anand Malik Union Limited, Amul Judak in Gujarat in a prime example of which industrial ownership category. Amul ର full form ଆଜି ତମାନେ ଜାଣିଲ. ଅମୁଲ ର full form ସବୁ କି ଜାଣି ନଥିଲ. ଅମୁଲ ର full form କି ସବୁ ଜାଣି ନଥିଲ. ସତ କହିବ ଯିଏ ଠିକ ପାଠ ପଢୁଛି ସତ କହିବ. वेरी गुड. कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री आम कहे परफेक्ट. हाँ ठीक अच्छे जो जाने ठीक अच्छे. हाँ प्रणाम कहे. हाँ अमूल इज ओन्ड एंड मैनेज कोऑपरेटिव बाय मिल्क प्रोड्यूसर एंड फार्मर्स इन गुजरात. Where and when was the first successful modern cotton textile mill established in India? Very good. Perfect. I'm going to Kolkata, which is Mumbai, in 1854. Perfect. How? The first successful modern mechanized cotton mill was established in Mumbai, Bombay in 1907 by OSSC Nana Bhai Dawa. India's first modern jute mill was established in 1855 at which location near Kolkata? एगुड़ाक आसूची पूजा कहते बोध क्वेश्चन गुड़ाक ये रिसरा आम कह. The pioneer jute mill in India was set up at Risra near Kolkata on the banks of the Hooghly River in 1855. The Vizag-Chennai Industrial Corridor VCIC forms the initial phase of which broader economic corridor initiative? Very good. Perfect. It is the pronunciation which is to post economic corridor is pronounced, but Mosa can hold which of the following is classified as a basic or key industry in economic geography? Perfect. Iron and steel is the answer for the question. Consumer industries produce goods consumed directly by the consumers. Which of the following fits this category? Sugar and pharmaceutical medicine production. Software development by IT parks represent which type of industry due to their low reliance on heavy raw metal transport? Coming to Maharaj, footless.
industry टा काम करছে software units are classic put to industries because they transmit data digitally and have negligible heavy transport transport. German economic geographer Alfred Weber published his monumental treatise on industrial location in which year? मते इकोनॉमिक आसुनी प्रणाम प्रणाम छोटो हो अरे मस्त कहीं के एमती होउछन मोर संगे मोर संगे कली 1909 प्रणाम सो 1909 कौन सब 1799 दे चलेनी एते कुछ की सब देछंती की समस्त देछंती 1799 माड़ हम तुम मान अल्फ्रेड वेबर 1868-1858 जर्मन इकोनॉमिक्स हाँ ना नहीं हाँ नहीं हाँ तांकर नथिला इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी तांकरी ना कहीं कार बा परफेक्ट टाइम पर प्रश्न को theory of the location of industry in location theory what does the material index measure प्रणाम मधुस्मिता सत्य दुटा कौन लिखिछन्ति मसा भल कहूँ ठीक ठीक हृदय भांगे पड़ो हाँ ना the ratio of the weight of localized raw materials to the weight of the finished product material index helps to determine whether an industry is material oriented index 1 or market oriented index. The Bangalore Mumbai economic corridor BMEC project has been planned and evaluated with strategic insights from which European nation United Kingdom of a heavyweight reducing industry will structurally seek to minimize total production cost by locating nearest to sorry. The source of heavy raw materials and inputs perfect हो प्रणाम सनी हो अरे कौन हो एमती माने मो हाथ रे स्पीड पड़े आछे हो छाड़ा a weight gaining industry like a beverage bottling is economically driven to locate wages to हाँ 24 आंसर देलो हाँ आम होचे लार्ज कंज्यूमर मार्केट जोटा काम को छाना नहीं पेन हाउ since shipping bulky or liquid filled final products over long distances costly factories located near consumer markets are profitable हाँ ना नहीं the national industrial corridor by NIDC हाँ नहीं national industrial corridor development corporation acting as the apex implementing agency was established in which year NICDC मन अच्छे ना नहीं परफेक्ट आम कहे 2008 परफेक्ट लाइन प्रश्न को NICDC originally TMICDC was incorporated on January 2008 to oversee the planning and execution of industrial corridors. How? In Alfred Weber's least cost theory of industrial location, what does isodependence represents? प्रणाम प्रकाश परफेक्ट आम कहे लाइन्स कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सराउंडिंग द मिनिमम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लोकेशन हाँ नहीं हाँ अरे जेके अरे तमें बोधे भूली गला बोधे अच्छा यहाँ आम कौ इकोनॉमी कहूचे
आम इकोनोमिक को माने जोटा आम कहूँ इंडस्ट्रियल जियोग्राफी गोटे नहीं इंडस्ट्रियल जियोग्राफी जो मान सिलेबस अच्छे इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन एग्रो बेस्ड वर्सेस मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड इकोनॉमी बेस्ड थ्योरी जोटा कहूँ इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छे ना नहीं हाँ प्रणाम प्रणाम क्यों हाँ remains in its original historical location even after the original location advantages have vanished due to high shifting cost and established infrastructure परवर्ती प्रश्न को जीवा why has India's sugar manufacturing industry exhibited a notable geographical shift from northern states Uttar Pradesh Bihar towards southern and western state बाजूटा का महाराष्ट्र and कर्नाटक प्रणाम प्रणाम निकिता very good परिणाम को due to the tropical climate in the south ensuring higher scarce content in sugarcane and a longer crushing season perfect okay the Raulkela steel plant in Odisha strategically located near mineral belts and water sources was established the technical and financial collaboration from very good C West Germany होचे perfect which specialized economic corridors links the port city Visakhapatnam with the Chennai along India's eastern coastline very good Vizag Chennai industrial corridor VCIC है ना नहीं this is India's past coastal economic corridor farming is one of the west coast economic corridor is EC which of the following manufacturing activities is classified as a classic put to lose industry बड़ ऑप्शन मिस यूज नहीं एतटा बड़ ऑप्शन हटे दीची खुशी electronic microchip component assembly and software development perfectly under the national manufacturing policy the government introduced a large scale integrated industrial township equipped with world class infrastructure known as गोटे गोटे अच्छी सब माने हटिनी किछि जगह अच्छी national investment and manufacturing zones NIMAZs नहीं Bhilai steel plant in Chhattisgarh was constructed in collaboration with which foreign partner country? प्रणाम प्रणाम रोजी आओ आंसर दिलो पे माने former Soviet Union USSR the sugar industry in Maharashtra predominantly operates under which form of industry organization structure perfect तो आंसर दिशा तापर गाड़ीटा मु देबी ना गाड़ी कौन बाहर लोक देबे सब गोटे मेंढा डेला माने सब मेंढा डोइमे ता पछ पछ अच्छा कोऑपरेटिव सेक्टर मॉडल जोटा कहते जेके चालाक पड़ी गले मु कॉपी करछि Maharashtra sugar sector is largely organized on cooperative lines owned collectively by sugar cane growing farms. What is the primary function of dedicated freight corridors by DFCs developed by Indian Railways? Good evening, Payal. Perfect. I am going to see exclusively run heavy haul freight trains at high speed decongesting routes and reducing industrial logistic costs.
The Durgapur steel plant in the West Bengal was built with the financial and technical assistance from which nation? इधर जेमती कहार भूल हुई चा चूड़ा मुड़ी नुह दोसा आउ छेना गुड़ 1 kg रिलीफ नहीं कि आसीबे मु 2 days हेबो खाइनी अरे मसा United Kingdom UK is the province of प्रश्न को जिबा Durgapur steel plant समस्त जानी छे established during the second 5-year plan with British UK collaboration हाँ नहीं where cotton textiles mills traditionally concentrated in Maharashtra and Gujarat, the Mumbai Ahmedabad belt. Very good. I'm going to say due to local availability of raw cotton, humid and maritime climate, preventing the thread snapping and access to the capital ports. The Bokaro steel plant constructed during the fourth 5-year plan received assistance from which country? Very good. Soviet Union. Perfect. Which industrial sector in India categorized as a mineral-based consumer and capital goods enterprise? Very good. Perfect. Iron and steel machinery manufacturing. Perfect. Iron and steel machinery relies on metallic mineral processing, placing it squarely in the mineral-based heavy industrial category. In Alfred Weber's theory that what does a material index by MI greater than 1 signify? 1340 प्रश्न আছে the industry is weight reducing by material oriented and it tends to locate near raw material sources. Perfect. What is the primary characteristics of the intermediate goods industry? सत्य तो हमर बन्या रे कहि कना हसिबे समझते कोन तक कोनती स्विगी जोमेटो होची प्रणाम समस्त प्रणाम. They manufacture goods used to as inputs of raw materials by the other industries of other production by chemicals, refined metals. The Bangalore-Mumbai Economic Corridor BMEC links two major economic powerhouses passing primarily through which states? मतलब सबुठु फास्ट आजिर क्लास हम वेरी गुड आम कर कर्नाटक एंड महाराष्ट्र परफेक्ट BMSC connects the Karnataka and Maharashtra fostering high tech manufacturing and industrial nodes along its alignment. Perfect. Which factor explains why the jute industry in India is overwhelmingly concentrated along the banks of the Hooghly River in West Bengal? सर ये चूड़ा हो मुड़ी भात डालमा 3 days हेबो खाई 500 kg कमी गले कौन कहूछ तमे सत्य abundant local jute cultivation in rich alluvial soils, ship water transport and abundant local power and port access to टाका होचे परफेक्ट प्रति प्रश्न को जिबा. In the context of economic development, what are agglomeration economies primarily known to reduce? 1344 प्रश्न আছে very good. Operational and transactional cost of for clustered business through shared infrastructure and specialized labor pools. Which of the following enterprises is an example of the cooperative sector in Indian agro processing? प्रकाश रखिछन से जो फ्री वाला गिफ्ट मिलुची जेंती कोन हमर स्वराज हमर मझे मझे करथला सेंती कहले
सर केतेबेले स्टार्ट है क्लास स्टार्ट है माने 9:30 तो स्टार्ट ही ऑब्वियसली कथा बट 9:45 रु माने प्रॉपर क्वेश्चन स्टार्ट है प्रकाश से जो फ्री वाला तर धीरे धीरे गोटे दौचे सुधा राम अमूल डेयरी कोऑपरेटिव सुगा मिल्स इन क्वेश्चन इंडिया फॉर प्रश्न बुझा नहीं सॉरी 100टा क्वेश्चन जी पर why is the aluminum smelting industry categorized as heavily energy intensive often dictating its plant location near massive power sources because aluminum production requires enormous amounts of continuous electrical power during the electricity reduction of aluminum perfect plan प्रतिप्रश्न को जिबा how the Hall Herald electricity process used to reduce aluminum into pure aluminum consumes massive amount. Okay. The National Industrial Corridor NICDC Development Corporation functions under the administrative control of which ministry in India? समोसा तो समोसा पुणी चाउमिन समोसा पनीर समोसा कौन सत्य ये पुणी केवट नुआ उद्भावन है of Ministry of Commerce and Industry. Under the Department of Promotion and Promotion of Industry and Internal Trade D.EL.Ed Ministry of Commerce and Industry. Perfect. मुझे टाइप कला वाले जी ओटा पूरे रही हो. What is the primary purpose of establishing special economic zones for SEZs near major coastal ports in India? नहीं मु इवनिंग क्लासेस तमाने मोर मजाक उड़े देलो ना बड़ ऑप्शन करी कि मु कहली नहीं बड़ ऑप्शन भी देबी ता तो किछ बेट उड़ा देबी टू बूस्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड added foreign direct investment FDI through tax incentives and simplified rules perfect how draw quotes which the following industries represents a mineral based capital goods producer ये अन्य सर सेमिति बन्यारे मिले सेमिति समस्या कि सर आपण को पिला हाँ मु जानी heavy industrial machine tools and electrical equipment manufacturing perfect प्रश्न को जिबा the Chotnagpur industrial plateau region is heavily anchored around the rich deposits of which underlying precious combination फिर माने टिके वीडियो गोटे लाइक कर दियो लाइक टिक कर दर त माने करू न लाइक पळै जाउ सब ठक and metallic minerals and thermal energy sources perfect प्रश्न को जिबा iron ore coal mica copper सब अछि the Chotnagpur plateau is India's premium mineral heartland rich in coal iron ore mica and various metallic minerals perfect in Alfred Weber's least cost theory what does the critical isotope help an entrepreneur determine और समस्ते गोटे लाइक कर पिला वीडियो तो माने ए जे लाइक करनो क्लास रे 18 जन देखला बडू लाइक करछ 16 जन हां नहीं पिला whether relocating from the least transport cost site to cheaper labor site will yield net cost savings उटा कम कहछे what is the unique locational advantage of the Visakhapatnam steel plant compared to inland steel plants like Bhilai or Raurkela It is a port-based integrated steel plant facilitating easy import of cooking coal and export of finished steel. Okay, the phenomenon of industrial India describes a situation where नहीं व्यूज सेमिति काउंट हुए नहीं पूजा सेमिति काउंट हुए नहीं व्यूज केमिति काउंट हुए देखो व्यूज अलग वॉच आवर अलग an industry continues to operate in its historical location even after
ओरिजिनल लोकल एडवांटेजेस ऑफ डिसअपियर ड्यू टू हाई ट्रांजिशन कॉस्ट धन्य गोटे पिला आसला जस्ट ओके गोटे जन एग्जांपल हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एस्टाब्लिश्ड लेबर फोर्सेस ट्रैप फैक्टरीज इन द ओरिजिनल साइट्स डिस्पाइट चेंजिंग रिसोर्स गोटे एग्जांपल दो धन्य गोटे पिला जस्ट आसला चैनल को देखिला जस्ट गोटे लुक लुक माने जस्ट क्लिक कला पुणी अगेन बैक करदेला ताहले भी से कौन हम आम कहूचे गोटे भ्यू रे काउंट हम ठीक अच्छे एमती जिते आम लाइव क्लास करुचे कंटिन्यूसली बहुत पिला आसवे जॉइन कर बाहर पढ़ुं अच्छा ये एक्सप्लेन करी कि also the phenomenon of industrial inertia okay describes a situation where that's अच्छा हाँ बुझो इंडस्ट्रियल इनर्टिया कहले कौन कुछ कॉन्सेप्ट है कोटार इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी रो ठीक है जोटा कौन एक्सप्लेन करे हाँ बुझी दोछ it is कौन कुछ an industry continues to operate in its historical location even after original local advantages have disappeared due to high transition cost अच्छा धरिन गोटे बहुत पुराना गोटे धरिन गोटे माइन नो गोटे इंडस्ट्री अच्छी ठीक अच्छे इंडस्ट्री थी माने आख पाखे निहाती गोटे रिच मिनरल्स थी बोली रिच सप्लाई गुड़ाक थी बोली से इंडस्ट्रीटा एस्टाब्लीश कर वाटर सप्लाई हो देन माने मिनरल सप्लाईज गुड़ाक हो आख पाखे थी सप्लाई प्रॉपर्ली हो पार्थ बोली थी हाँ ना हाँ हाँ ना माने धरिनियो गोटे इंडस्ट्री गोटे जगह माने एस्टाब्लीश होगी अच्छी ठीक अच्छे माने आगुरी होगी थिला हिस्टोरिकली कही ठीक अच्छे पर कौन है से जो मिनरल्स गुड़ाक कौन है धीरे 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 कमिला कहीं आम जाचे नेचुरल जो मिनरल्स गुड़ाक परमानेंट नुहे हाँ ना मिनरल्स गुड़ाक धीरे 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 से जगार ह्रास पाइला कमिगला ठीक अच्छे तापर जो इंडस्ट्रीटा माने तार जो पुराना जो प्लेस जोटार से थिला ठीक अच्छे कहीं स्थानांतरित तो हो पारनी कहीं फैक्ट्री एस्टाब्लिशमेंट कॉस्ट बहुत हाँ नहीं तो स्थानांतरित तो न होगी जदि सेठी पुणी चालू रखिया तो शिल्प को है आम कौन कहे इंडस्ट्रियल इनर्टिया कौन कहे गोटे टाइप गोटे जगह सेमती माने गोटे टाइप जड़ वस्तु जमती मुव करे ना से भाई माने सी गोटे जगह से कहला ना मु पछे सप्लाईज न आसू किंतु मुई गोटे जगह ही रही ये गोटे जगह मुझे जी प्रोडक्शन हो करी ठीक अच्छे कहीं यार रिजन गुड़ा कौन ना गोटे जगह आउटा जो माने चेंजेस करे तार इंडस्ट्रियलाइजेशन माने इंडस्ट्री माने मेसीन गुड़ाक जहाँ भी हो एटसेट्रा सब चेंज कले खर्च अधिक हो ना जंत्रपाति हो कि गोटे कारखाना माने जगह दरकार पुणी गोटे बिल्डिंग दरकार सब जिनस पुणी बिल्डिंग सेटअप हम इलेक्ट्रिसिटी सेटअप बहुत जिनस खर्च अधिक हो हाँ तापर धन्य पूर्व माने से इंडस्ट्री को जीवाई रेलवे ट्रैक बनाई कि माने रेल विद्युत सबू जहाँ तुम कहीपर माने जहाँ सब सुविधा गुड़ाक पूर्व दि जाता से गुटा सब से बिल्डिंग को जाइए से सुविधा भी मिलनी हाँ ना पुणी नुआ मिलने पुणी नुआ खर्च हम तापर प्रॉपर आम कौन कह नुआ इंडस्ट्री एस्टाब्लीश हो माने नुआ कर्मचारी भी तो दे पारनी हाँ ना माने पुराना जो स्टाफ गुड़ाक अच्छे से गोटे ये कंपनीटा बंद है गोटे जगह मेसीन गुड़ाक उठाई जाऊँगी तो ता भीतर जो प्रोसेस रे नुआ मेसीन लगे पुणी डबल खर्च हम हाँ ना तो सी जिनस उठे कि मेसीन गुड़ाक खोलिक एस्टाब्लीश करेंगे मैंने सेटअप करेंगे मैंने तो ये जो लेबर मैंने थे तो खालीटे बसैकी रोजगार दबनी हाँ ना खालीटे बसई दरमा तो दे पारे तो दक्ष श्रमिक गुड़ा जो थे अंडर से पलैबे हाँ ना तापर कौन जो पुराना जो रही कौन माने कहीपर इंडस्ट्रियल एरिया गुड़ाक सब टाउनशिप ही से टाउनशिपटा भी हाथ जीव हाँ मार्केट भी थी मार्केट संगे कंटाक्ट थी कस्टमर्स थे बिजनेस गुड़ाक थी हाँ ना सब सी जिन हाथ पलैब ये मोस्टली ये जानी अधिक पे जानी प्रणाम प्रणाम श्री प्रणाम चलते ठीक अच्छे जीवा नॉइस बुझीपारे कि क्लियर which the following best defines backward like linkages in industrial economy networks प्रणाम आरबी अरे छोटू कोड़े गला परफेक्ट हम कहूचे the dependence of an industry on its supplies for raw materials machinery and components perfect प्रदर्शन को जीवा backward linkages connect a manufacturing unit back to the raw material and the equipment suppliers. It's relief open.
Why is the paper manufacturing industry typically classified as both water intensive and matter oriented? How speed of jiba बुझे टाइम हम पाखरे कम 40 मिनट मात्र because paper mills require massive volumes of water for processing and heavy fibers pop raw metals found. Forest water problems na kujiba. The Salem steel plant in Tamil Nadu specializes distinctively in the production of which जोटा न बुझे पे पचार सेमती सैलेंट रही कहीं तुमको ही हराण कर हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट जोटा इन इंडस्ट्रियल जियोग्राफी व्हाट डज द मटेरियल इंडेक्स बाय एमआई फॉर्मूला रिप्रेजेंट इंडस्ट्रियल जियोग्राफी तुम कहते ना इंडस्ट्रियल जियोग्राफी प्लस इकोनॉमी तुम दीटा क्लास हो जाऊँ इनडायरेक्टली the weight of localized raw materials divided by the weight of the finished product. How MI is equal to weight of the localized inputs, weight of final output. It determines that if an industry is raw material or market oriented. Perfect. Chennai has emerged as a premier hub for the automobile manufacturing industry, earning it the power popular moniker. सर ऐड अप कर दिया ठीक अच्छे कर दूँ गोटे सेकेंड कर दीजिए सर ओके परफेक्ट 10 मिनट अप हो जाए D.EL.Ed ऑफ इंडिया परफेक्ट कर प्रश्न को जीवा which factor primarily drove the concentration of the cotton textile industry in Mumbai during the 19th century? टेक्स्ट बुक आड़ा से अच्छा humid maritime climate preventing trade breaks, black soil hinterland and port import export facilities. What is the fundamental economic purpose of the dedicated freight corridors DFCs in India industrial corridors? There is certain question to segregate the freight from the passenger traffic, reducing logistic cost, transit times and transport bottlenecks for industries. Perfect. The petrochemical industrial complex in the Gujarat is heavily centered around which twin industrial hubs? There is section of Islam. Perfect. I am going Vadodara and Jamnagar. है ना समझ mostly जानी चाहिए Alfred Weber's least cost theory. If an industry is weight gaining its material indexes, very good. गोटे आंसर ही परफेक्ट आस वेरी गुड पायल परफेक्ट गोटे पिला ठीक देछि गधिया सब गोटे मिनट डेई पड़ा सब ता पछ पछ सब गोटे समस्त कॉपी कर दला हाँ ऑब्वियसली अल्फ्रेड वेबर को तांकर जो लिस्ट कॉस्ट थ्योरी जोटा इंडस्ट्रियल लोकेशन हमको 1909 मटेरियल इंडेक्स बाय एमआई जोटा कमे कोछि कोन कहिदिले एमआई इज इक्वल टू वेट ऑफ द लोकलाइज्ड रॉ एमआई इज इक्वल टू व्हाट्स वेट ऑफ लोकलाइज्ड रॉ हाँ नहीं तापर कौन वेट ऑफ फिनिश्ड क्रिया हाँ नहीं which feature characterizes food to lose industries such as computer software development and electronics assembly. सर आप जानी नाई नहीं सत्यजित चलवा नहीं तम मन मानी चलवा नहीं how they have flexible location requirement because transport cost of inputs outputs are a minor component of food like purpose. The national investment and manufacturing zones ANIMs are structured as for data car बोलना है integrated industrial towns with the state of the art infrastructure and simplified regulatory environments. Why did the Indian sugar industry experience a geographic migration south toward Maharashtra and Karnataka?
So B for what option? नहीं सब B कहीं है perfect ଆମେ କହୁଛେ due to tropical condition in the south offering higher sugarcane process content longer crossing season ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ବା what to do forward linkages refer to in an industrial economic framework a good supply of an industry's finished or intermediate products to downstream user industries or consumers ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ବା the Choto Nagpur plateau is often termed as the Ruhr of India because very good. It concentrates India's massive mineral wealth, heavy metallurgy, coal and industries manufacturing analogous Germany's Ruhr Valley. Which of the following is classified as a public sector heavy engineering enterprises in India? Very good. Bharat Heavy Electricals Limited. In August loss economics location theory, what is the primary objective of an entrepreneur when selecting a factory site? Profit plan maximize the total net profit where the total revenue exceeds total cost of the greatest margin. Hooghly industrial region is in West Bengal, historically grew up around which initial core manufacturing sector? Very good. Due to textile mills and engineering workshops. Perfect. What does the term agglomeration economies signify for manufacturing firms clustering together? Very good, Jackie. These cost savings related from the shared infrastructure, specialized labor pools, and auxiliary service networks. Okay, which industrial sector is categorized under the cooperative sector in India due to produce owner management? Medicine power cooperative sugar mills and dairy unions like Amul. Perfect. The Delhi-Mumbai and Industrial Corridor DMIC projects strategically aligned alongside which major freight and transport artery? सबुठु बढ़िया माने मस्त क्वेश्चन आसे कोड कहलो 1375 पाखरु why are heavy metallurgical industries like iron and steel strictly classified as basic industries? ना मु पूरा बाची तमान पे सीट बनै छी because they produce goods that serve as a raw materials for the manufacturing other machinery tools and infrastructure. Hyper medicine यदि मिल पियो कौन करिबा मिल तो पीनी आउ Bangalore Mumbai economic corridor PMEC has been assigned to promote advanced manufacturing and industrial nodes across कौन करे टिके हेवी फीवर हे जाई पारा आज बों को देह भी खराब थिला तो 2 दिन हेबो टिके पस पड़ी जातले बों को टिके नै हॉस्पिटल जाउतली सेति पे ही दिन समर क्लास टा टिके लेट हे जाउतला मु जणै नथली खाको हाउ एवे टू स्टार्ट हला तमरो सब टफ क्वेश्चन नो टफ नो सब इजी आ सब भलो क्वेश्चन व्हाट इज द फुट लूज इंडस्ट्री कहयो त माने भलो न लागे मते कहयो समस्त वीडियो को लाइक कर दलो माने जी वीडियो को लाइक करनो टी लाइक कर दो analysts not concerned by the raw material transport cost पर प्रश्न को जिबा हाउ which city is known as the Manchester of the India? दे चला सब भूलवाल दे चला D is the correct answer Ahmedabad and it's called Manchester of the India due to its massive cotton textile production माड़ा हबना बनी गाली सुनिबा ना सुनिबा इनको
व्हाट इज द material index for weight gaining industry तो माने एबुडा क्वेश्चन चाहुतलो तो पूरा शॉर्ट क्वेश्चन गुडा को शॉर्ट रे वेरी गुड बुझे एबुडा क्वेश्चन चाहुतलो तो लेस देन 1 कहूचे वेरी गुड which of the following is an agro-based industry अरे गोटे क्वेश्चन स्किप कर देली कि ना ठीक है very good due to manufacturing should manufacturing relies directly on the agriculture raw material perfect the Raulkela steel plant was built in collaboration with which country गोटे गोटे रिपीट बसी जाइए ताको किछ करी हबनी पहिले माने मन रहउनी अब 100टा क्वेश्चन मन लाला मन रहउनी कोटा रिपीट होला कि कोन व्हाट डू आइसोटोप्स रिप्रेजेंट इन वेबर्स थ्योरी very good lines of equal additional transport cost perfect बहुत प्रश्न को जिबा which city is famously called the D.EL.Ed of India very good very good perfect Chennai is the proper answer Chennai is topped the D.EL.Ed of India due to its large automobile manufacturing base the Delhi Mumbai Industrial Corridor DMIC is aligned with which freight network जल्दी सर वो क्लास में Western Dedicated Freight Corridor जोड़ा मुझे DMIC is planned along with the alignment with the Western Dedicated Freight Corridor which of the following is a mineral based heavy industry iron and steel is the proper answer for this question iron and steel industry utilizes metallic mineral ores like iron ore and coal Oxlow's industrial location theory focuses primarily on माने मोस्टली पूरा कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन द मैथ्स पूरा सिंपल माने गोटे गोटे सिंपल थ्योरी त माने क्वेश्चन को जीव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड मार्केट डिमांड हां नहीं percent to market demand and maximization net profit rather than just minimizing cost in which region has India's sugar industry experienced a major geographical shift मो मुंड जमती बुलाऊँगी मत बेले बेले गोटे गोटे क्वेश्चन नंबरिंग डबल देखा जाऊँ ग्लास भी एमती देनी साउथवर्ड टू महाराष्ट्र एंड कनाडा so it's shifted south due to tropical climate providing high and longer crossing what are the agglomeration economies अरे हाँ निकिता तमें कौन क्लास जॉइन होनतिलो तमर कौन हेल्थ इश्यू जितला समस्त तो एकना चलछ सर आपन रेस्ट नहीं अरे नहीं 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 तमन पे क्वेश्चन माने भी एकना सरला परे तापर जाय रेस्ट में पोस्ट सेविंग्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग the village steel plant was established with assistant from एखना मु तमन पे एखणी कोन करबी ना म एखणी पाखा पाखी 100टा क्वेश्चन काली 11टा समय रो बनेबी से पाखा पे गोटे की दुईटा हे जाय तापर से पड़ी certain part is famous for its industry region due to काली काली कुटाणीवा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस एमती करबा हिस्ट्री गोटे ज्योग्राफी गोटे पॉलिटिकल साइंस आज ज्योग्राफी गोटे गला काली हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस करबा देखिबा देखिबा लास्ट टू डिसाइड करबा लास्ट टू आके सारी देबा तापर लास्ट टू डिसाइड करबा काली कोन क्लास करबा आयरन मिनरल एंड कोल डिपोजिट्स the following is categorized as a basic industry जोटा कोचे
इंग्लिश टिके प्लीज अरे हाँ इंग्लिश कथा बोलिए ठीक अच्छे ये सरी जीव माने हिस्ट्री जो पॉलिटिकल साइंस भितर भाई मशा जा हाँ आइस आयरन स्टील प्रणाम प्रश्न को जीवा आइसक्रीम नुहे रे मु आइसक्रीम माने आइस आई अरे मु आयरन कहबी कौन आइस ए जा जा छड़ू मो आगे छुड़ू which Indian city is universally known as the Silicon Valley of India sir EVS economic ये भी चली परा EVS एनवायरमेंटल स्टडीज तो एनवायरमेंटल स्टडीज रो मस्त मस्त क्वेश्चन गुडा हम बनैथिली पूर्व क्वेश्चन अछि कि नै हो जानि सर मु आपन को पाद पाखरे मसा धूप लगै छी बेसिक इंडस्ट्री माड़ा हो विषय पर बेंगलुरु से प्रोग्राम से प्रश्न को छिपा which enterprise is a prime example of the cooperative sector हाइक मरिच बोधे हाँ मरिच तो जा आरामी कोटी करो इज्जत मत ना मशा भी कामुड़ी ले गोटे गोटे नहीं परफेक्ट गाने अमूल is the branch of प्रश्न को छिपा कहला अमूल is owned and managed by the cooperative by milk producing farmers in Gujarat Durgapur steel plant was constructed with help from Durgapur मशा को जाबन रागिया पे ना ना मु एते जल्दी टेम्परामेंट लूज करे ना पिला व्हाट इज इंडस्ट्रियल इनेटिया जदि गोटे प्रणाम प्रणाम आज प्रणाम गोटे टीचर जदि जल्दी टेम्परामेंट लूज करियो ताले स्टूडेंट तांटर कोन सिखिबे स्टेइंग इन हिस्टोरिकल साइट डिस्पाइट लॉस्ट ओरिजिनल एडवांटेज तमन कहबो ये कौन गोटा मास्टर ये तो निज टेम्परामेंट निजे कंट्रोल कर ये आमको शिखेब व्हिच स्टेट इज दुर्गापुर स्टील प्लांट लोकेटेड समझ जानी नहीं वेस्ट बंगाल परफेक्ट ला a weight reducing industry typically locates near से एग्जाम घुंची बना नहीं को एग्जाम पे माने को एग्जाम मत एक्चुअली कहले मु कहि दे पारी रॉ मेटल रिसोर्सेस इज द प्रोग्राम से पता उसना कुछ with reducing industries located in raw materials to minimize heavy transport expenses पर उसना कुछ which economic corridor connects Chennai and Bangalore सिटी एग्जाम को बाहर चलनी कि सिटी एग्जाम डेट बाहर चलनी CBSE से पढ़ना सब पता उसना कुछ Chennai Bangalore industrial for the C links to पता उसना what does matter index greater than 1 indicate सर एबे नहीं 7 रे कोन मो सिटी एग्जाम के तो डिक्लेयर हैला the industry is weight reducing under raw material oriented से देखो ही नहीं दे the Bokaro steel plant is situated in fake news Jharkhand is perfect what is the primary objective establishing special economic zones SEZs very good to boost export manufacturing and attract foreign investment perfect लाने गोटे सेकंड आम देखा काली को क्लास कर ठीक अच्छे गोटे सेकंड पे मैंने
हिस्ट्री पॉलिटिकल सब सिलेबस बाहर कर तुमने कह ठीक अच्छे तुमने डिसाइड कर काली कौटा करवा এটা हिस्ट्री नहीं पॉलिटिकल बाहर कर এটা কোটা এটা নথিব ওয়ার্ল্ড ওয়ার থিওরি এটা জিওগ্রাফি पॉलिटिकल साइंस से मिलगला अरे पॉलिटिकल साइंस एठी नहीं समस्त वीडियो को लाइक कर दिए पे गोटे सेकंड पॉलिटिकल साइंस परफेक्ट मास्टर कांसेप्ट परफेक्ट हो पॉलिटिकल साइंस में को जाय करिथिले लास्टली सरी जाइथिला एकोडा भी सरी जाइथिला अच्छा एगुड़ा सब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एगुड़ा सरी हबार थिला एगुड़ा हबार थिला रूरल सेल्फ गवर्नमेंट एगुड़ा हबार थिला किछि पिलान को निजे अच्छा हाँ ठीक अच्छे पॉलिटिकल साइंस मे भी मैं ट्राए करी यहाँ नहीं आस पॉलिटिकल साइंस ठीक अच्छे पे पॉलिटिकल साइंस यहाँ गोटे नहीं आस यूनिट 5 रो गोटे सेकंड ओएमआर को आम यहाँ क्लास 7 अंडर अच्छे 73rd अमेंडमेंट एगुड़ा सब यहाँ गोटे क्लासेस नहीं आसबि मे भी क्लास 7 और 8 दुईटा मर्ज करके 100टा क्वेश्चन एक भल क्वेश्चन नहीं आसबि बाकी रहा हिस्ट्री नहीं गोटे सेकंड पे मैंने नेक्स्ट तो इकोनॉमिक आसो हिस्ट्री गोटे सेकंड यहाँ आम सरी आज देन यहाँ भी कंप्लीट आज नेक्स्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टेटहुड ऑफ ओडिशा परफेक्ट एगुड़ाक आसो काली क्लास यहाँ हिस्ट्री इंडियन नेशनल मूवमेंट और स्टेटहुड ऑफ ओडिशा माने ओडिशा केमती माने स्वतंत्र राज्य भाव में मान्यता पाई ओके क्लास काली अच्छी यूनिट 5 इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टेटहुड ओडिशा मे भी सकाळ पर राति पर सेटा डिफरेंट पछरे देखा जीवो एटा पर कथा बट मोस्टली हिस्ट्री इटा आसीबो बाकी त माने जियोग्राफी समस्त जानिलो जियोग्राफी राति रे नुहे ता पर दिन हेबो इटा त मनकर पॉलिटिकल साइंस ठीक अच्छे फ्रेंड अगेन थैंक यू सो मच तुमको जय सारी सेशन बंद प्रधान एक्सपेक्ट करूँ क्लास बुझी पार्थ जदि क्लास भल तो निश्चिंत भाव वीडियो को लाइक करें भूल जदि वीडियो भल लगे तो निजर फ्रेंड्स मान सहित शेयर करें भूल नहीं थैंक यू जगन्नाथ सारी सेशन बंदे उत्कल जननी पे मैंने प्रभु ओके मोर रीजनिंग कड़े गला लास्ट पूरा थिला ब्लॉक एंड चैनल तो अच्छा करिबा मेडिसिन रखि दो पेन कड़े ओके स्ट्रीम डाउन कर दो